knowing me. So let us just start with this subject revision. First of all, there are first slide is of your syllabus. There are 6 chapters in your semester 5. Next, sir, first slide. We can go for first slide. Yeah. Yes. So there are 6 chapters in your syllabus. First chapter is Introduction to Cost Accounting. This is a theory chapter. Entire theoretical aspect will be asked from this chapter. Second chapter is material cost. Third chapter is labor cost. Fourth chapter is overhead. Fifth chapter is classification of cost and cost sheet. And sixth chapter is reconciliation of cost and financial record. So in semester 5, these 6 chapters will be there, and out of these 100 marks paper will be coming from the 6 chapters. Now next slide, what I have given you is first of all the paper pattern, that how the paper will be there in the Mumbai University. So next slide, sir. Yes. So there will be Mumbai University paper pattern. It says there will be 5 questions. There will be 5 questions. Question number 1 will be of 2 part, A part and B, and this will be your objective questions. First will be multiple choice question, MCQs. There will be 4 options will be given to you, and you have to choose the correct answer, and that will be of 10 marks. Okay. Now very important thing will be there. There will be 12 MCQs will be there. 12 MCQs होंगे वहां पर, और आपको they will be asking you to attempt any 10. But I will suggest you to attempt all the 12. अगर आपको 12 पूछा है तो 12 के 12 आप अटेंड करिए, because any 10 will be corrected. आपके जो भी 10 करेक्ट होंगे उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाएंगे. तो आप ये ना करें कि आप 10 क्वेश्चंस को ही यहाँ पर जो है any 10 लिखा है तो 10 ही ढूंढ कर करें. 12 MCQs है, डू 12 पूरे के पूरे 12 जो है वो आप चेक करें और 12 के 12 चूज करें उसमें से. सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs will be there of 10 marks. The second B part will be true or false. Generally true or false without reason, मतलब reasons नहीं पूछेंगे, either the sentence is true or false. So 10 marks MCQs where 4 objective 4 MCQs will be given to you, and you will have to select the one and then true or false. So 10 marks ka A part and B part, that will be your question number 1, 20 marks. Now question number 2 will be your practical problem. Now this practical problem will come from any chapter. There is no saying that question number 2 will be of cost sheet or question number 2 will be of material cost. Anything, order can be anything. So question number 2 will be a practical problem, and there will be a internal choice in the question number 2, one practical problem, और उसके ऑप्शन में भी आपके सामने practical problem होगा. Now last few years it has been observed that Mumbai University, ये observe किया गया है कि क्वेश्चन नंबर 2, 3 में बहुत बार क्या करते हैं, 10 मार्क्स के सब क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं. ओके, 10 मार्क्स के सब क्वेश्चंस में कैसे, जैसे एक मटेरियल का 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया, साथ में लेबर का 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया. तो सब क्वेश्चंस हो सकते हैं इफ द स्मॉल क्वेश्चंस आर देयर. अदरवाइज 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा. इफ अ कॉस्ट शीट इज देयर देन एंटायर 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा. क्वेश्चन नंबर 3 अगेन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. Question number 4 again practical problem. So second, third and fourth will be a practical problem. Question number 5 will be again 2 पार्ट में रहेगा, A and B. 10 मार्क्स के 2 थ्योरी क्वेश्चंस रहेंगे. Either you attend this or short notes रहेंगे 6, out of which you need to attend 4, 5 marks of each. Okay, so these 5 questions will be there. 5 questions रहेंगे. Question number 1 objective, question number 2 practical, 3 practical, 4 practical, and 5th will be your theory question, और उसके सामने आपके short notes रहेंगे. I think am I audible, sir? मेरा आवाज proper आ रहा है ना? Yes ma'am. Okay, good, great. Yes. So now moving forward, now अब हम लोग आगे चलते हैं. अब हम चैप्टर वाइज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों को इसमें कैसे प्रिपरेशन करना है,
क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना